हेलो एवरीवन, वेलकम टू Oliveboard। जैसा कि हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पीओ का एग्जाम जो कि प्रीलिम्स एग्जाम है that is scheduled on 22nd of April 2019. So we have a very few days left for the exam. So इस वीडियो में we will discuss कि आपकी exam attempt strategy क्या होगी and few last minute tips which are very simple to understand and may seem like कि हाँ ये तो हमें पता है, but it is always better to know it from someone else or hear it from someone else. But before we start with the video, don't forget to take up a free mock test provided by Oliveboard for Jammu and Kashmir Bank PO examination by clicking on the link given to you in the description box. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel for latest videos. So, जैसा कि हमें पता है प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न इज जस्ट लाइक एनी अदर बैंक एग्जाम, चाहे वो IBPS हो या SBI PO हो. वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन. सो इंग्लिश लैंग्वेज में वी हैव 30 क्वेश्चंस कैरिंग 30 मार्क्स एंड क्वांट्स एंड रीजनिंग हैज 35 questions carrying 35 marks each. यहाँ पे sectional timings है, we can see. Now, first and foremost is how to attempt. आपका exam attempt strategy में two most points to be noted is no blind guesswork. अगर आपको कोई question का आंसर नहीं आता है, please do not attempt. आपको पता है there will be penalty for wrong answers, इसीलिए guesswork मत करिए. लेकिन अगर आप elimination का method use करके 2 या 3 options को हटा पा रहे हैं, then it becomes a calculated guess. So it is good to take calculated guess अगर आप elimination use कर पा रहे हैं, but please do not try to go for blind guesswork. Also the second thing is do not get stuck on one question. अगर आपको एक question नहीं solve हो रहा है तो just finish it then and there. उसको छोड़ दीजिए, अपने ego पे मत लाइए. You can come back to that question in case you have time left. Now, few of the last minute tips that I would like to give you is first and foremost is to avoid new topics. See, now that we have very few days, like roughly 5 days left for the examination, so try and avoid learning any new topic. Do not talk to your friends जो बोल रहे हैं कि ये पढ़ लो इसमें से क्वेश्चन आएगा. All you need to do is revise right now. तो जो जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक उसके ऊपर कमांड रखिए and just revise as much as you can. Take mock test because mock test से क्या होगा, you will know, you will be able to measure your progress. तो आप Oliveboard का mock test ले सकते हैं. एक free mock test भी लेके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाला हुआ है उसका. और एनालिटिक्स पे ध्यान दीजिए, तो एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी एक्यूरेसी कैसी है. यू विल ऑल्सो नो आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज. तो जो भी स्ट्रॉन्ग एरियाज है उस पर कमांड रखिए और जो वीक एरियाज है उसको प्रैक्टिस करिए. अभी आप प्रैक्टिस करेंगे सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जाम. Now, as I already mentioned, revision is the key. तो रिविजन को लाइटली मत लीजिए सिर्फ लास्ट डे के लिए. अभी से ही सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स को याद रखिए, उनको भूलिए मत एंड हाईलाइट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. और जो भी आप शॉर्टकट्स या फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं उनको एक सेपरेट नोट में रख लीजिए, ताकि एक दिन बिफोर द एग्जामिनेशन या जब आप ट्रैवल भी कर रहे हैं आपके एग्जाम सेंटर पे, तो आप फटाफट उनको गो थ्रू कर सकें. Now, time management is very important. हमको पता है it's all about time. Sectional timings है, इसीलिए do not lose track on your time. बहुत easily हो सकता है कोई एक question आ गया, आप ego पे ले लोगे and you'll be like नहीं ये question तो I will solve. ऐसा नहीं करना है. You have to manage your time properly so you can attempt maximum number of questions. Also talking about speed and accuracy, ये दोनों ही बहुत important है because आपको speedily answers attempt करने and they have to be accurate. Don't go about just in speed और accuracy हो ही नहीं, and don't also spend like a lot of time behind accuracy so you cannot attempt a lot of questions. Also, you need to read the question properly. So you have to understand what is written in the question. अपने आप assume मत कर लीजिए फटाफट में. Don't skip what
is asked in the question. इसीलिए read the question properly and before skipping the question also आप सोचिए, questions पढ़े बिना उनको skip मत करिए, because कभी कभी questions lengthy होते हैं, difficult लगते हैं, but they are actually very easy to solve, especially the puzzles. Also, you need to avoid stress and anxiety. You have to stay calm and composed before the exam, and please do not get too excited or too worried. Okay, थोड़ा light exercise करिए, meditation करिए, पानी पीजिए बहुत सारा. This will help you. Also try and stay away from negative thoughts. जो भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं या गलत बोलते हैं कि एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है, उनसे दूर रहिए. जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके, एंड गिव योर बेस्ट, बिकॉज अगर आपने हार्डवर्क किया है तो यू विल गेट थ्रू द एग्जाम. यू नीड टू ईट राइट. अभी वेल बैलेंस्ड डाइट खाइए, बर्गर, पिज्जा, पास्ता मत खाइए. अवॉइड ऑल ऑयली एंड शुगरी स्नैक्स एंड स्टे वेल हाइड्रेटेड. बहुत सारा पानी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए, गर्मी का टाइम है. ओके, यू नीड टू रिलैक्स एंड रेस्ट ऑल्सो. तो आपको अगर अभी एंजाइटी हो रही है, वो आपका प्रेपरेशन को स्पॉइल कर सकती है. सो ऑलवेज टेल योरसेल्फ दैट देयर इज नथिंग that can stop you from achieving great heights, that can stop you from clearing the Jammu and Kashmir PO Bank ka prelims this time. Also, do not deprive yourself from sleep. Proper sleep लीजिए, concentration उससे बहुत बढ़ेगा, and you will be able to clearly remember things. Now exam का checklist. So call letter, फोटोग्राफ मेंशन्ड है, आईडी प्रूफ का एक जेरोक्स, बॉल पेन एंड रीच द सेंटर इन एडवांस. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड. इन सबको एक दिन पहले ही चेक कर लीजिएगा बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. Oliveboard wishes you all the very best for Jammu and Kashmir PO Prelims examination. Do like this video, share it with your friends and help them, get these very small little tips. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel for more such videos. Thank you.